हेलो सबके स्वागत है हॉर्नबिल टीवी ते মই সৈম রাইসিং ইতিয়ালা নাগামিস খবৰ জনাওলে अगरतला लगा रूलिंग भारतीय जनता पार्टी खान आज एक क्रुशियल मीटिंग लोशे पंचायत लगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स खान लोगो जनरल इलेक्शंस 2023 लगा पार्टी पोल स्ट्रेटजी डिस्कस करवो करने पार्टी लगा नेशनल इलेक्शन इंचार्ज तो महेंद्र सिंह असे कुंड आज लगा मीटिंग ते प्रेजेंट थकिशे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनिक साहा पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रतिमा भौमिक लोगो मीटिंग तो क्लोज डोर थकिशे और बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य पर रिपोर्टर्स खान के जनाइशी की इलेक्शन तो आहे ऐसे कोई किना इदो करने तैखान लगा पंचायत लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स लोगो मीटिंग अरेंज होशे आहा साल मार्च लगा पोल्स करने डिस्कस करवो करने वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे যার উদ্দেশ্যে আমরা নিজেদেরকে উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করেছি সেই ভারত মাতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হচ্ছে পার্টির স্রষ্টা ডক্টর শ্যামা ওই বিরোধী দলগুলোর মুখ একবারে বন্ধ করে দিতে হবে কেননা তারা যত দিন যাচ্ছে তারা মোরাল আজকে আমাদের ত্রিস্তরীয় যে পঞ্চায়েত এই পঞ্চায়েতের যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রধান উপপ্রধান তাদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে আগামী 2023 যে বিধানসভা নির্বাচন সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের কি করণীয় এবং সংগঠন কিভাবে পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধানরা কিভাবে সংগঠনের কাজ করবে সহযোগিতা করবে তাই এই আলোচনা করার জন্যই আজকের এই সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে December 9 राती कोहिमा लगा कल्चरल हॉल ते मिस नागालैंड 2022 to 23-year-old हिकाली आचमी जनपतो प्राजितिशे कुंतु द ब्यूटी एंड एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ नागालैंड खान पर प्रेजेंट करासे कैपिटल कल्चर सेंटर कोहिमा ते आचमी तो 1 लाख और गिफ्ट हैम्पर्स खान पाइशे फर्स्ट रनर्स अप तो फेक प्रा 20-year-old केने रित्से और सेकंड रनर्स अप तो 21-year-old जेंटरन मोकोकचुंग प्राजितिशे इदो रनर्स अप खान तो कैश प्राइस ₹70,000 और ₹50,000 पाइशे गिफ्ट हैम्पर्स खान लोगो Subtitle winners Kantu, Gentleman Miss Beautiful Skin, Hekali Achumi Miss Multimedia and Miss Beautiful, Ketuyu Fisenyo Miss Talent, Kene Ritse Miss Photogenic, Chochoy Lojem Miss Perfect 10, Aro Lino VP Kiba Queen of Hearts Jitishe. Ida beauty pageant to BASN Pra organized Korease Kuntu Department of Tourism, Government of Nagaland, Aro Task Force for Music and Arts Khan Pra empowered Korea ase. Aro Chief Electoral Office Nagaland and Department of Tourism laga support pra organize हुआ से Miss Nagaland 2022 लगा guest judge खान्तु Irene Dhakar Miss Northeast 2022 Miss Meghalaya 2022 Ishani Hatimuria और अलग judges खान्तु Miss Northeast 2022 first runners up Miss Assam 2022 Dr. Abeni Khuvung Miss Diva Universe finalist East Zone 2014 Miss Nagaland 2013 first runners up Miss Waka 2013 Lavi Mezur Entrepreneur Manager Commonwealth War Graves Commission and Teja There Proprietor Multiplex and former BASN Treasurer Khan Takishe. Is Hikali Achumi. I am a BTech graduate who aspires to become a successful engineer. I strongly believe in empowering women and I wish to be an example of an upright woman and influence the women folks of my state and beyond. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Injala, 21 years of age, who aspires to become a social entrepreneur, and I strongly feel the importance of dignity of labor. Thank you. Good evening, everyone. My name is Diazin Yonchojo. I am a vivacious 19-year-old girl who aspires to pursue a PhD in literature. From being a timid girl to the woman that I am today,
to beauty pageants, the role of beauty pageant is to empower women, and it is a platform where women come together and voice out on what they believe in, what they stand out for. And can it be more beautiful than Miss Nagaland 2022? I don't think so. So I would like to take this opportunity to extend my heartiest congratulations to all the contestants, and I wish them all the best. तमिलनाडु लगा मामल्लापुरम ते साइक्लोन मेंडस आहिया पीछे चेन्नई और कोस्टल एरियाज खानते हेवी रेनफॉल आहि पाइकेना चारटा मानु मुरिशे चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन कोशिकी इदु साइक्लोन प्रा इतिया तक चारटा मानु 98 कैटल मुराइशे और 181 रेसिडेंसेस खान डैमेज हुशे आंध्र प्रदेश लगा तिरुपति डिस्ट्रिक्ट लगा केवीपी पुरम मंडलते आज हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुशे 258 mm कुंटू बे ऑफ बंगाल रीजन ते ट्रॉपिकल साइक्लोन मेंडस एक्टिवेट थक्या करने Opposition All India Trinamool Congress Khanpra candidates Khan laga list jolti announce kurbo Meghalaya te upcoming assembly polls nimite reporters Khan ke kotha kore humai te AITC aro opposition laga leader pra khushi ke candidates Khan laga uporte fasla kurule thakatu party Khan complete kurbo TMC Khan logote 12 MLAs ase kote ekta MLA pra resign kora pichote 11 MLAs hoshe 3 jun legislators Khan party jaldi chharu lese Garo Hills te para NPP legislators Khan TMC join kurule se but in phases that's the party is working on this whole aspect of completing the exercise pertaining to deciding upon the candidates in the respective constituencies and hopefully though not at one go will be able to proceed in a phased manner interested for few constituencies we are looking at the possibility but at the same time strategically tactically wherever needed we may or we may not okay that is also there as we are not laying the cards on the table at the moment but then we are keeping the cards close to our chest Meghalaya's leader of opposition Mukul Sangma pra joakali kushi ki NPP led state government laga failure pa ILP implement kurule promise kuratu state manukhan logote dokhai dia laga ase koikina kushi reporters khan ke kotha kura humaite Mukul pra kushi December 2019 te state assembly te sob milaikina resolution pass kurishe resolution to ekbar pass kura pichete India laga government khan pra approve kurule alop din logo koikina kushi the collective intent of the people of the state will have to be understood from that perspective given the kind of resolution that was adopted unanimously. Therefore, the engagement and the resultant outcome of that engagement culminated into a resolution which has been already submitted to Government of India. So those are indications of what is the collective intent. But now the only question is that are the political parties who are in the government, who were party to that resolution, are they sincere enough or not? Now the overall demand for ILP became louder and louder all across the state of Meghalaya, including other states in the northeast. It has its own reason, as we have shared earlier. What was the main triggering factor? The triggering factor was that the Government of India, the current dispensation in Delhi, political dispensation, who are in the government, wanted to bulldoze a law to be passed by the parliament, which was considered as law which will have ramification on the future demography of the northeastern states. And therefore,
there was a collective resolve to oppose this very proposal of Government of India. But did they listen? They did not listen. They bulldozed. They bulldozed. They bulldozed in the parliament. And unfortunately, even the parties who committed to the people of the state, like the party which is leading the government in Meghalaya, the NPP. पंजाब ते तान तरन डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान बॉर्डर लगा ओसोरते सरहाली पुलिस स्टेशन ते जोआकाली फुजोर 1 बजे ते रॉकेट प्रोपेल्ड अटैक होशे एदो अटैक कुरियातो प्रो खालिस्तान लगा ग्रुप्स खान परा होबो कुशे और अटैक कुरिया हमाइते पुलिसमैन खान 10 जून बिल्डिंग लगा ओसोरते रिपोर्ट कुरिकिना थाकिशे कोइकिना कुशे ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ जोआकाली राज्यसभा ते यूनिफॉर्म सिविल कोड ते प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस कुशे ऑपोजिशन खान पर प्रोटेस्ट थाको हमाइते बीजेपी एमपी किरोदी लाल मीनापरा यूसीसी बिल इंट्रोड्यूस कुशे कोते टोटल 63 मेंबर्स खान पर वोट कुशे और 23 जून इदु वोट लगा खिलाफ थाकिशे बीजेपी मैनिफेस्टो ते यूसीसी तो बिशी इलेक्शन ते थाकिशे और प्राइवेट बिल तो पेंडिंग ते थाकिशे होले भी इंट्रोड्यूस कुरियाने यूसीसी तो एकता प्रपोज लॉ से सिटीजन्स खान लगा पर्सनल लॉस फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट कुरुले निमिते रिगार्डलेस ताखान लगा रिलीजन जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये चाहते थे कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए लेकिन जो कुछ मुस्लिम सदस्य थे उन्होंने उसका विरोध किया तो वो अटकी रह गई तो आर्टिकल 44 में ये संविधान में डाला है कि आगे कॉमन सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए। फिर साहबानों के प्रकरण के समय चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने समान नागरिक संहिता की बात कही थी उसके बाद खरे साहब ने कही थी अब भी सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट्स ने कई बार सरकार को ये आगाह किया है कि इस समय कॉमन सिविल कोड लाया जाना बहुत जरूरी है इसलिए मैंने ये पार्टी का स्टैंड है मैंने आज कॉमन सिविल कोड का बिल इंट्रोड्यूस किया है राज्यसभा में। विपक्ष का तो विरोध करने का एक कारण है वो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं देश के मुसलमानों में भय फैलाना चाहते हैं उनको बहकाना चाहते हैं ये सबके लिए है केवल ये कोई मुसलमान विरोधी नहीं है हर कास्ट हर क्रीड हर धर्म के ये हित में बिल है देश के हित में ये बिल है और जिसे मैं एसटी का आदमी हूँ मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ मैं हिंदू हूँ लेकिन दूसरा हिंदू 2 शादी नहीं कर सकता मेरी जमीन आप नहीं खरीद सकते तो ये डिस्पैरिटीज हर जगह हैं उन डिस्पैरिटीज को खत्म करने के लिए ये बिल है। दिसंबर 8 दिन ते ट्विनसांग लगा बैप्टिस्ट थांगियन हायर सेकेंडरी स्कूल ते डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन प्रोग्राम यूथ खन करने SDGs 2030 ते लुशे इदो कंसल्टेशन प्रोग्राम तो नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया प्रा ऑर्गेनाइज कुरिया से और यूरोपेमा यूनियन प्रा को फंड कुरिया से कुंतु दोलेन थांगजम सोसाइटी ट्विनसांग खान प्रा होस्ट कुरिया से इवेंट ते अलग अलग पैनलिस्ट खान प्रा SDGs 2020 टॉपिक्स खान रिलेटेड ते डिस्कस कुरशे सेशन ते आर्किटेक्ट सी नायुंग प्रा एकता प्रेजेंटेशन दिशे वेस्टर्नाइजेशन कंटेक्स्ट लगा पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट नागलेंते JSCO डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रा सोसाइटी ते यूथ खान किने का पीसफुल और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन प्रमोट करो पारो इदुते कथा कुरशे इदु इवेंटे वुमेन एम्पावरमेंट लगा टॉपिक्स ते भी कथा कुरशे नागलेंड माकी लगा स्टीरियोटाइप और यूथ लगा रोल क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करोले लगाते प्रोग्राम ते 489 यूथ्स खान अलग अलग सेक्शन ते प्रा अटेंड और पार्ट लुशे वुमेन एम्पावरमेंट लगा टॉपिक तो अटेंडिस खान प्रा रेस कुरशे Understand the importance of community and to have family, to have someone that I can lean on to, right? It showed me the importance of relationships, be it professional or personal.
right? Clean air is so important. Like, it really affected me because in California, for the past 2-3 years, the fires were really bad, right? Mountains and mountains of land was up in flames, right? People lost so many houses. Malibu was like crashed. People lost so many of their houses because of global warming. This is climate change, because the seasons get drier, the wind gets faster, right? So the fire becomes more. So, but that leads to really, really bad air quality. And when you're living in a place like Delhi also, I believe you guys have been to Delhi, na? You can see it. Breathing in Delhi is like, what did they say, like smoking 10-20 cigarettes, right? There is no room for a family with no male child, and daughters are never considered as a part of the property sharing. So Nagaland is the only state in India where there was opposition for 33% of women in the society. You know, when the Naga Mother Association demanded for this 33% reservation, so many chaos, havoc, fight, even people lost their lives. Like, and then what did the male politicians or what did the male leaders say? That we are going against our customary laws and that our customary law protects or debarks women from having this kind of opportunity. Tuhin Kanda Pandey, Secretary Investment and Public Asset Management और Ministry of Finance लगा Department पर जो खाली खुशी की asset monetization और privatization एक ही लोगों ते मिले के ना जाले investment cycle achieve करूबो और economic potential और private sector आगे ते आनी वो खुशी ना खुशी CII खान पर Global Economic Policy Summit 2022 organize कुरेते पांडे पर कथा कुरिया हुमाय खुशी private sector खान productivity increase करूले लगे investment ते पर पैसा भाल पर earn करूले निमिते. Basically, we're talking of productivity and competitiveness. Basically, we're talking of capex. What's happening is when we are actually divesting, instead of the government taking the responsibility of further capex, we are entrusting that possibility of capex to private sector. So it's not that in the same economy, and why we are showing so, we said private sector should be able to raise productivity, and therefore they would be able to get better value for money from the same investments. And that's the key. So I would say that if you really, just to give you an example of some of the divestments too, many people are aware of Air India privatization. And you can see, spin-off happening every day. So it's not in the nature of, the government getting resources, or to some extent government saving the opportunity cost, because we had to put 20 crores a day in the budget, from the budget. But also because, there was a stage in that organization where it couldn't grow. And growth was very important, particularly for when we had India as a 5 trillion economy and onwards to a very large economy. इथे एक खाता break থাকিব আৰু খবৰ নিচাই থাকিবি Hornbill TV. Piles Cure Center, Burma Camp Walford Road, opposite Police Point, Dimapur. Contact 9863758600 or 6909717178. আৰু সবকে স্বাগত আছে মিজোৰাম মামিত ডিস্ট্ৰিক্ট লগা জোৱাল নামতে ছয়টা ট্ৰাকতে ইলিগেল এৰিকানা म्यांमार আৰু পপি সিডস আৰু আলা কমোডিটিজ খান ধৰিয়া লগা সাসপেক্টে জলাইছে আজি 3 am তে আইজৱাল জালনাম মামিত ডিস্ট্ৰিক্টে ছয়টা গাড়ীটো এৰিয়া লগা ৰেসিডেন্টস খান পৰা ৰখাইছে আৰু আইটেমস খানটো আনলোড কৰি কেনা গাড়ী লগত জলাই দিছে এটো ঘটনাতে গাড়ী লগা ড্ৰাইভাৰ্স খানটো পলাই দিছে সোর্সেস খান জানাইছে কি সব ছয়টা গাড়ীটো মিজোৰাম ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ থাকিছে কৈ কেনা কোতে একটাটো আইজৱাল ডিস্ট্ৰিক্ট চাৰটা চাম্পাই ডিস্ট্ৰিক্ট পৰা পাঁচটা কলাসিপ আৰু 8 টো মামিত ডিস্ট্ৰিক্টে পৰা জলনাম পুলিচ খান এটো কেছটো ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে আৰু বিলখোৱাটিলিৰ এৰিকানাটস গ্ৰোৱাৰ্স কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি খান পৰা আজি একটা স্পেশাল অ্যাসেম্বলি মাতিছে কোতে তাই খান ডিসাইড কৰিছে কি তাই খান म्यांमार তে পৰা আহিয়া ইলিগেল সুপাৰিটো ব্লক কৰিব কৈ কিনা কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি আৰু ডিসাইড কৰিছে কি আহা ওয়েডনেসডে দিন তে পৰা তাই খান এৰিয়াতে বেছি ষ্ট্ৰিক্ট থাকিব কৈ কিনা म्यांमार লগাই লিগেল সুপাৰিছ ধৰি কিনা ট্ৰাক আহিয়া খানটো ৰখাব কৈ কিনা Nagaland laga Hornbill Festival kuntu Festival of Festivals koikina mate idu
আজি খতম হৈছে গ্লিটাৰিং ক্লোজিং সেৰেমনিতে কতে 1000 ওপৰ ভিজিটাৰ্স খান আহি পাইছে ডমেষ্টিক আৰু ফৰেন মানুহ খান ক্লোজিং সেৰেমনিতে স্পেশাল গেষ্ট টু স্টেট laga চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু গেষ্ট অফ অনাৰ টু দেশ laga সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ সঞ্জয় কিষণ কলতে আহি পাইছে Citizens of Nagaland, ladies, gentlemen, Ami Bishi Kushi Paisha Aji. It's an honor for me and my wife to be here at the closing ceremony of the 23rd Hornbill Festival of Nagaland. I thank the government of Nagaland for invitation to this mega event as the honorable guest. I extend greetings to the peace-loving people of Nagaland who coexist in harmony with their unique cultural traditional system. Nagas are not only for their bravery but hospitality, warmth, which I am experiencing it. Nagaland, a land of festivals, has been on the national, international map of tourism, which is a positive step in ushering development in the state. This kind of festival brings people together from all across the globe and creates a sense of unity and diversity. The customary laws and traditions are unique, which are protected under the Constitution of India, and Supreme Court has been recognizing and upholding your customary laws. Judiciary is an important pillar of democracy, which gives opportunity and mechanism for dispute resolution. A strong, effective and vibrant judiciary is the backbone of the society in order to ensure that no one misses out opportunity to approach courts due to social economic barriers. As Executive Chairman of the National Legal Services Authority, it is my duty to ensure access to justice for all by bridging the gaps. I wish you all in advance a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you and Jai Hind. Ito থাকিছে এতিয়া তাকলা খবৰ আৰু খবৰ নিচাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি